question, please put it in the Q&A box, and I will save plenty of time in the room as well to take your questions later on. But for now, let's just get straight on with the Q&A, Mr. Gandhi, and maybe we can start with your walk across India. I think it was called the Bharat Jodo Yatra, right? Is that the Unite India March? Or is that the correct translation? You walked 4,000 kilometers through 14 states, I think 146 days. You only finished in January. So why didn't you start by telling us why you did this walk and what you learned? Member of Parliament or thank you for having me here. It's an honor for me to be here. आपने वीडियो पर जो देखा उसी के बारे में चर्चा करने को हम लोग आए हैं क्योंकि कल शपथ ग्रहण समारोह है मेघालय की सरकार का उनके बारे में हमने क्या कहा वो तो जुदा बात है लेकिन उनके बारे में बीजेपी के महानुभावों में क्या कहा वो आपके सामने और अब वो सरकार का हिस्सा बनेंगे. So I will hand over the floor to my senior colleague, I had never imagined at that time, who heads the PCC in Meghalaya and was also a member of Parliament, to speak to you about the government formation that's going to happen in Meghalaya tomorrow, contest and the kinds of things that the BJP said during the campaign on corruption. I mean, if you had even told me at that time, I would have said that it was a ridiculous thing to say. Thank you. But the nature of the democratic contest in India has completely changed, and the reason it's changed is because one organization that you have seen in the video, called the RSS, that what the BJP has said during the campaign, and fundamentalist fascist organization, so has basically BJP captured pretty much all of India's institutions. And maybe for those who don't know, can you explain what the RSS is? RSS is you can call it a secret society. Party in India. What they have said, the other parties also. It's built along the lines of the Muslim Brotherhood. The Honorable Prime Minister and the idea is to use the democratic contest to come to power and then subvert the democratic contest afterwards. All of them accused. It shocked me at how successful they've been at capturing the different institutions of our country. The press, the judiciary, Parliament, so this is what Election Commission, all the institutions are under pressure, under threat, and controlled in one way or the other. So the conversation, the voice that was free-flowing, the debates, those have all stopped. Some of the biggest decisions taken, demonetization, which is demonetization of the Indian currency. We were not allowed to debate in Parliament. Right? The farmers' bills, where large numbers of farmers were out in the street, we were not allowed a conversation in Parliament. The GST we were not allowed. When Chinese troops entered our territory, we were not allowed to have a conversation in Parliament. So that stifling made us ask ourselves a fundamental question. How do we communicate with the people of India when the media is biased, when the institutions are captured? And the answer we came up with in the Congress Party was this walk across the country, which has a tradition. The word is yatra, it's journey. But it's not simply a journey. It's an Indian idea of walking, of persevering, of listening, and of questioning oneself. And so we decided to do this. It was 4,000 kilometers, and it was quite an experience. It was a fun experience, painful at times, but we all learned a lot. And it placed on the table रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज की अध्यक्षता में इन सारे संगीन और गंभीर भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने के लिए मेघालय में ये भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का वक्तव्य था.
तो भ्रष्टाचार पर चुनाव की कैंपेन के दौरान बोला जाएगा, लेकिन चुनाव की गतिविधि खत्म होने के बाद भ्रष्टाचारियों से ही गलबैया, भ्रष्टाचारियों के साथ ही मिलकर सरकार बनाई जाएगी। ये असली चाल चरित्र और चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का। और छुटभइये नेताओं ने नहीं, इस देश के प्रधानमंत्री ने, इस देश के गृह मंत्री ने और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने पुरजोर तरीके से मेघालय की कॉनराड सांगमा की सरकार को, जिसका वो हिस्सा थे, सबसे भ्रष्ट सरकार बताया और ये कहा कि इनके खिलाफ जांच होनी चाहिए और अब उन्हीं के साथ हाथ जोड़ने को तैयार खड़े हैं 2 सीट लेकर। तो अगर ये पाखंड और ढोंग नहीं है तो और क्या। और ऐसा पाखंड और ढोंग भ्रष्टाचार पे हमने लगातार कर्नाटक में देखा है, हमने लगातार मध्य प्रदेश में देखा है, हमने लगातार गोवा में देखा है, लगातार उत्तर प्रदेश में देखा है। लेकिन अब समय आ गया है कि इस पर चर्चा हो, इस पर बात उठे कि कैसे भ्रष्टाचार पे बड़ी बड़ी टीकें हाथी जाती हैं जब चुनाव प्रचार किया जाता है और उन्हीं भ्रष्टाचारियों के साथ एक साथ मिलकर लामबंद खड़े होने को तैयार रहती है भारतीय जनता पार्टी। अभी कर्नाटक का जो भ्रष्टाचार का संगीन आरोप है वो कहीं गए नहीं है ठंडे बस्ते में। माडाल जी अभी भी 77 घंटे बाद फरार हैं। ये एमएलए हैं भाजपा के, अभी भी फरार चल रहे हैं। उनके लड़के ने 40 लाख घूस लेते हुए पकड़े गए थे, उनको रिजाइन करना पड़ा कर्नाटका सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड से, लेकिन वो अभी भी फरार हैं। कोर्ट भले पहुंच गए हो राहत के लिए। और उस समय हमें ये सुनाई दे रहा और दिखाई दे रहा है कि कल सरकार का गठन होगा और भारतीय जनता पार्टी उस सरकार का हिस्सा बनेगी। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगी कि अगर आप सो मोटो पे पूछ लें तो बड़ी कृपा होगी। Many people broke their legs, arms, because there's huge pressure of people. There were thousands, at times 50, 100,000 people walking. So it was physical experience. Deeply entrenched in. The other thing I learned is that no amount of exercise makes you lose weight. It's like a completely a myth. I mean, at the end of this thing, 4,000 kilometers, I go on the scale and I put on 1 kilo. I mean, so I'm like, okay, so it's totally diet. It's nothing to do with exercise. That's the other thing I learned. बीजेपी के मेघालय के अध्यक्ष हैं, उनका बयान मैंने How has the walk been received politically? I mean, obviously, you did it for the reasons you said, but you're also a politician. You're seeking to win public support. There are national elections coming up in India. What's your sense in terms of how it's been received in terms of your own political position and Congress's position in India? बीजेपी के अध्यक्ष मेघालय के जितना चुप रहे उनके लिए कारगर रहेगा। बीजेपी के मेघालय के अध्यक्ष सिर्फ ये बता दें कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आके कहते हैं स्पेशल टास्क फोर्स नो लेस देन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रिटायर्ड जज के अधीन गठित होगा और वहां पर आप उस सरकार का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और जहां तक आपने प्रोसिक्यूशन की बात करी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की, तो अगर वैलेंटाइंस डे पे युगल जोड़ियों को पीटा जाता है, कालिक पोती जाती है उनके चेहरे पर, या 25 दिसंबर को जब यीशु मसीह का जन्मदिन मनाया जाता है दुनिया भर में, आप उनकी मूर्तियां तोड़ते हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, जब आप क्रिसमस मनाने जाने वाले लोगों का और सांता क्लॉज बने आदमी को 5-5 लोग मिलकर पीटते हैं, वो कौन सा लोकतंत्र है? और वो कितनी हिफाजत कर रहे हैं किसी क्रिश्चियन की, ये भी बताने का कष्ट करेंगे। You want to talk about it in English? A young woman. There's a struggle going on, particularly if you're walking 25, 30 kilometers a day. There's a struggle going on, and you sort of are jointly going through that thing, right? So it's a completely different conversation that happens. The other thing I did, which I think helped a lot, was right in the beginning, I got the guys I work with and I said, look, what is my responsibility here? You know, what is mine and your responsibility here? We are walking 4,000 kilometers and that's all fine. But what is it that we will not accept in this war? हमारा बयान निकाल कर दिखवा दीजिए जहां पर हमारे राष्ट्र नमस्कार ने कहा हो कि हम मेरे साथ आज मेरे वरिष्ठ करेंगे
आपने परसिक्यूशन की बात करी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की, तो अगर वैलेंटाइंस डे पे युगल सरकार का किया जाता है, कालिक होती जाती है उनके चेहरे पर, या 25 दिसंबर को जब यीशु मसीह का जन्मदिन मनाया जाता है दुनिया भर में, आप उनकी मूर्तियां तोड़ते हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। जब आप क्रिसमस मनाने जाने वाले लोगों का और सांता क्लॉज बने आदमी को 5-5 लोग मिलकर पीटते हैं, वो कौन सा लोकतंत्र है और वो कितनी हिफाजत कर रहे हैं किसी क्रिश्चियन की, ये भी बताने का कष्ट करेंगे वो। And the feeling I want us to generate is that when they leave this place, they feel that they've left home. So in my mind, it was not a political exercise. In my mind, it was a personal exercise where I was welcoming people like into this room and giving them a space to feel comfortable and talk, and also making it a personal talk, not a political talk. And we were successful at doing that because there was a lot of pressure, security people pushing and pulling. And so we created this sort of cocoon there where anybody came in, felt comfortable. And then some magic started to happen. Because the moment they started to see this, that there's this connection in the 21st century where, you know, we're not going through the WhatsApp, or we're not going through Facebook and all that. And there's this gentleman who's come here and these people who've come here and they're talking to us. रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में, Then क्योंकि ये the nature नंबर of the 1 conversation भ्रष्ट changed सरकार है, completely. जिस सरकार का आप 5 साल हिस्सा रहे, उसके खिलाफ आप प्रोब कराने की बात कर रहे हैं, उसके खिलाफ प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक बोल रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं, और अब आप उनके साथ गलबैया करने को तैयार और हम सवाल भी ना उठाएं, ये तो नहीं होगा। आपने हमारी महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की बात करी, बड़ा अच्छा जिक्र लाया, क्योंकि हमने साथ मिलकर भाजपा के 33 साल के किले को ध्वस्त किया है कस्बा पेट में। अभी भाजपा उस हार से उबर नहीं पाई है, और भाजपा ने हमारे अलायंस पार्टनर के साथ जो करना था महाराष्ट्र, वो करके लोकतंत्र को बिल्कुल क्षीण करने का काम किया। मैं आपसे पूछता हूं, आपने शब्द का इस्तेमाल किया कट्टरता का, हमारे कौन से अलायंस पार्टनर ने कौन सी कट्टरता दिखाई? मुझे लगता है सवाल पूछना अच्छी बात है, लेकिन आज की वस्तुतः स्थिति को नकार दें हम और हम इस पर कुछ ना बोलें, वो शायद लोकतंत्र का भी असम्मान। But each country has its own history, its own philosophy, its own way of thinking about these things. So definitely there are two sort of visions of the planet emerging. I mean, that to me is clear. There's a sort of free, democratic, open space idea, and then there's a sort of more controlled, coercive idea. कि हम बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हैं, हमारी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। अगर आज राबड़ी देवी के यहाँ सीबीआई रेड कर रही है, हम उसकी भर्त्सना करते हैं, और इसलिए करते हैं क्योंकि ये कोई संयोग नहीं है कि 4 गुना ईडी के केसेस बढ़ गए 2014 के बाद, और 95% केसेस आपके सारे के सारे विपक्ष के खिलाफ है। आपकी ईडी, आपकी सीबीआई, आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस जो ऑलरेडी प्रोब कर रहा है, वो अडानी के घर नहीं पहुंचता है, अडानी को एक नोटिस नहीं जाता है, वहां उनके पोर्ट पर, भैया मुद्रा पोर्ट पर लाखों करोड़ों रुपए की ड्रग्स पकड़ दी जाती है, एक एनसीबी की रेड नहीं होती है, कोई चर्चा नहीं होती है। तो हमारा जो स्टैंड एजेंसीज के दुरुपयोग पर है, वो बिना संशय के, बिना लब्बो-लबाब के एक ही बात है कि एजेंसीज का दुरुपयोग ऑपोजिशन के खिलाफ किया जाता है। लेकिन जिस वाक्य का आप जिक्र कर रहे हैं, एक ये भी सच है कि दिल्ली की शराब नीति उस वक्त बनाई जा रही थी जब दिल्ली बेदम होकर बिना ऑक्सीजन के तड़प रहा था, और अगर ये नीति विड्रॉ न करी गई होती तो हर घर के नीचे शराब का ठेका खोलने का बंदोबस्त हो गया था, महिला सुरक्षा या अराजकता को ताक पर रखकर। तो ये सवाल कैसे नहीं उठेगा, और ये सवाल इसलिए भी उठेगा कि जब विपक्ष, बाकी विपक्ष के खिलाफ एक्शन करती है ये एजेंसी, चाहे वो हमारे नेता हो, या चाहे वो बिहार में हो, या चाहे वो महाराष्ट्र के नेता हो, आम आदमी पार्टी एक शब्द नहीं बोलती। क्यों नहीं बोलते वो? आपको डिसाइड करना है कि आप भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है या आप विपक्ष में हैं, और अगर आप विपक्ष में हैं तो आपको विपक्ष के साथ हर मुद्दे पे खड़ा रहना पड़ेगा। और इसमें सबसे बड़ा पाखंड और ढोंग तो भारतीय जनता पार्टी का नजर आता है। 7 सांसद आपके थे, 8 विधायक आपके थे, तमाम काउंसलर आपके थे, लेकिन जब ये शराब नीति बन रही थी तो सबको साफ सूंघा हुआ था। उन लोगों की लिस्ट देख लीजिए जिनको फायदा पहुंचाने का काम आप करने वाली थी, उसमें से अधिकांश तो भाजपा के डोनर लिस्ट में नाम आता है। तो ये जो नूरा कुश्ती है, इस पर हम कंफ्यूज बिल्कुल नहीं है। हमारा स्टैंड क्लियर है कि आरोप बड़े गंभीर है, आरोप के ओरिजिनल
कंप्लेनेंट शिकायत करता हम हैं और इस पर बिल्कुल जांच होनी चाहिए, लेकिन उसी सांस में मुझे बिल्कुल भी संशय नहीं है ये कहने में कि अधिकांश जगहों पर आप ऑपोजिशन के खिलाफ ही अपनी एजेंसी को यूज करते हैं। कहां इनकी एजेंसी क्यों नहीं पहुंची अपने कर्नाटक एमएलए के यहाँ जिनका लड़का 40 लाख की घूस लेते हुए पकड़ा गया? कहां ये एजेंसी येड्डी जी के खिलाफ जब अब उनका हाथ पकड़ के मोदी जी टहला रहे हैं क्योंकि इलेक्शन आ गए, उनको गंभीर आरोपों के दौरान निकाला गया था? तो ये तो दोहरा मापदंड है। हम दोहरा मापदंड कहीं नहीं अपनाते, ना बिल्कुल भी कंफ्यूज है। It becomes very difficult for democratic countries. मुझे लगता है कोई विपक्ष का दूसरा नेता कौन क्या कह रहा है उनका हम थोड़ी भी पकड़ के बैठ सकते हैं। ये सवाल ही अपने आप में बेमाना है। हम दूसरा विपक्ष का कोई नेता क्या कह रहा है हम उस पर नहीं पकड़ सकते। जैसे कि जब हमारे नेताओं के खिलाफ ईडी हर तरह की षड्यंत्र कर रही थी तो समूचा विपक्ष हमारे साथ खड़ा था, लेकिन तब क्या किसी ने पूछा था कि समूचा विपक्ष खड़ा है, आम आदमी पार्टी क्यों नहीं खड़ी? राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी समूचे विपक्ष ने, क्यों नहीं आम आदमी पार्टी ने उस पर साइन किया था? तो जब आपके ऊपर आए तो सारा तंत्र हो जाए और जब हमारे ऊपर रहे तो आप एक चूना करिए, ऐसे तो नहीं चल manifesting along caste lines, along religious lines. I think we might come back to that economic question later if we have time on economic models. But obviously, the BJP would say to you that you're looking for excuses for why Congress hasn't been able to cut through. 2 days back, I think less than 48 hours back, I had played some videos here. And those videos are Mr. Modi stating the most obnoxious things on foreign soil. From Seoul to Shanghai to Moscow to Toronto to the US to Abu Dhabi to Oman, wherever he has traveled, he has always spoken against India's political leaders. He has said things like, लोग समझते थे क्या पाप किया है कि हिंदुस्तान में पैदा हुआ in Shanghai, on Chinese soil. He has said things like nothing happened in 70 years. He has demeaned India's freedom struggle. He has demeaned the institutions that we have built. He has demeaned an average Indian who works very hard and contributes to nation building. Is that not defaming India? So it's not. And who are you talking about? That Golimar or Anurag Thakur, that they've come to power in India, who actually got promoted because he was speaking venomous hate speeches. If he had not spoken that, he would have never graduated from being a minister of state to a cabinet rank. And I want to ask him, when Rahul Gandhi talks about a world which is divided between America and China on two sides, and India can be that huge power with its democratic values and the values of Mahatma Gandhi, is he defaming India or is he actually lauding India's values? When Rahul Gandhi says on foreign soil, on British soil, that Indian democracy is a public good, I think we should be very proud about it. And instead the BJP is finding facts to criticize it. What exactly is their position? The structure. And what do they have to say about the various statements that Mr. Modi has made? And may I put every issue in India's parliament? I challenge you. Are you willing to debate every issue in India's parliament? Are you willing to come forward and say that when Mr. Gandhi speaks about Adani, we will answer on Adani. When he speaks about high prices, we will not say hum lesan pyaz nahi khate. When he speaks about unemployment, we will not say pakoda tallo. When he speaks on China, we will not say koi ghusa hua nahi. Are you willing to debate? You cannot. And I challenge you, they cannot debate these issues. I mean, you can see what's being done to the Dalit community. मुझसे सवाल पूछा गया, अनुराग गोलीमारो ठाकुर ने कुछ वक्तव्य दिया है राहुल जी पर। अनुराग ठाकुर की जो पदोन्नति है वो उनके नफरती बयान के बाद हुई। अगर उन्होंने मंच से ये घृणित नफरती बयान करके दिल्ली के दंगे ना भड़काए होते तो शायद उनकी पदोन्नति भी ना होती, वो मंत्री राज्य स्तर के ही बने रहते। कैबिनेट मंत्री बनने के लिए उनको नफरत का सहारा लेना पड़ा, तो वो तो सबसे पहले पाठ ना पढ़ाए, वो मुझे बताएं किसने कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया इस देश में हिंसा भड़काने का। पहला सवाल। दूसरा सवाल, प्रधानमंत्री मोदी ने, चाहे वो चीन हो, चाहे वो दक्षिण कोरिया हो, या जहां पर भी वो जाते हैं, चाहे वो मॉस्को हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो ओमान हो, अबू धाबी हो, टोरंटो हो, जहां पर भी वो जाते हैं वो देश के ऑपोजिशन के खिलाफ ही आग उगलते हैं। जब वो कहते हैं विदेशी धरती पर कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तो वो देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, क्रांतिकारियों का और हर भारतीय का अपमान करते हैं जो 2 जून की रोटी कमाकर राष्ट्र निर्माण में सहयोग करते हैं। और इसीलिए मैं पूछती हूं, जब वो कहते हैं कि हिंदुस्तान के लोग 2014 से पहले कहते थे क्या पाप किया कि हिंदुस्तान में पैदा हो गए, वो सम्मान बढ़ा रहे हैं देश का या देश का सिर झुकाने का काम करते हैं? और मैं आपके सामने एक सवाल बोलती हूं और पूछती हूं, राहुल गांधी जी ने क्या कहा? राहुल गांधी जी ने कहा एक दुनिया जहां पर अमेरिका और चीन लड़ रहा है, वहां पर हिंदुस्तान की जो लोकतंत्र है वो इस विश्व के लिए सौगात है और हमारी बड़ी अहम भूमिका होगी। इसको तो सिर माथे लेना चाहिए और ताली बजानी चाहिए भाजपा के लोगों को
लेकिन इन नासमझों को न समझ है और ना देश से प्यार है। और अंत में एक बात कहती हूं, आपको लगता है राहुल गांधी जी ने कुछ गलत कहा है तो आइए बात हो जाती है, सदन में बात कर लीजिए, लेकिन शर्त एक ही है, जब वो अडानी पर बोलेंगे तो आप कांपते हाथों से पानी नहीं पीजिएगा, आपको अडानी पर बात करनी पड़ेगी। जब वो महंगाई पर बोलेंगे तो हम लहसुन प्याज नहीं कह के कहते आप भाग नहीं जाइएगा। जब वो बेरोजगारी पर बोलेंगे तो पकौड़े तलने को नहीं कहा जाएगा, और जब वो चीन पर बोलेंगे तो आप सारे देश के सामने बिना पलक झपकाए ये झूठ नहीं बोल सकते कि कोई घुसा हुआ नहीं है। अगर आप में हिम्मत है तो आइए हर मुद्दे पर चर्चा कर लेते हैं पार्लियामेंट में। आप में हिम्मत नहीं है, आप में सिर्फ दुष्प्रचार करना है, और आपको अधिकांश चरण चुंबक जो बन चुका है मीडिया उसका सहारा है। अगर वो सहारा ना हो 2 दिन आप टिक कर खड़े नहीं रह सकते। It happens through the parliament, it happens through assemblies, it happens through the courts, it happens through the election commission, right? And my worry is that the architecture of that negotiation is being attacked and broken, right? And you can see sort of the symptoms, right? The Prime Minister one day turns around and demonetizes the entire currency. Rahul Gandhi, most of the senior the Reserve Bank doesn't know about from it. the Congress, they came and everything has been bypassed that's not the on case. something as fundamental as the currency of the country. That's an example. It may be, but and it's the same way the GST was worked out. In Meghalaya, right from so you can see that right from the reliance on those institutions from the state as well as member from the is reducing, and that to me is very, very dangerous. And also Jairam Ramesh ji came. So many of them came to Meghalaya. Certainly, there's repair work that needs to be done. So there's no short of the senior the idea of freedom, on the idea of independent institutions. There's a whole bunch of repair work that needs to be done. And then I think fundamental to a successful India is the decentralization of power. So what is happening, what you see, the trend you see is massive concentration of wealth. If S. Jaishankar stood the threat about China, he would not tell Chinese that we are a smaller economy and you are a larger economy, and how do we go and attack them? Is that not what he said in his interview? Mr. S. Jaishankar should actually resign from his position. If he had inch and an iota of morality in him, he should resign, and if there was an inch and an iota of morality or moral compass alive in the Modi government, he should be sacked for making a blasphemous statement like that. Because in one single stroke, he has actually demeaned our forces, he has put everyone to shame. In a modern way, in a decentralized way, in a technological way, and I think their linkages between the West and India are critical. Member of Parliament, I want to pivot a bit here to foreign policy and start with India and China. I know you're a keen follower of China, and obviously in the last few years we've seen these flare-ups at the border seemingly driven by China. There was a trajectory previously where Xi Jinping and Modi seemed to be getting on well. They had that team meeting in Wuhan. Why do you think in the last few years Beijing has decided to antagonize India? Because it seems to have really pushed India towards the West. Antagonize is sort of a benign word. I mean, they're sitting on 2,000 square kilometers of our territory. And the kinds of things that the BJP said during the campaign on corruption, doesn't quite capture and what exactly are they turning up to do? No. I mean... thank you and good afternoon. Yeah, it doesn't quite capture it. And the interesting thing is that when they did it, our Prime Minister said, in a meeting with the opposition where I was there, that not a single inch of Indian territory has been taken. So the right? Now, BJP what message does that send to the Chinese? NPP and other parties. Right. It's, the Chinese know they're sitting on 2,000 square kilometers of our territory. Our military knows it. And our Prime Minister says, well, they're not there. So, it encourages them. What they have said, the other so parties that's one aspect of the problem. The Honorable Prime Minister has come to Meghalaya. As a country, the Honorable Home Minister has come to Meghalaya. Our ethos and our DNA has come to Meghalaya. All of them democratic. The NPP. Right? I mean, there's the book, The Argumentative Indian, when the BJP got by Mr. Amartya said, we just like to talk and, you know, spend a lot of time talking and discussing things. And that's the way we build consensus, because it's very complex. And so, people of Meghalaya. That's why we in the Congress are pretty clear that whatever is going to be built, whatever is going to happen, has to be in a democratic, in a open,
structure. They betrayed the And that, people of course, with the false promises. that's not China. And right? today, BJP So, is behind so we are much more comfortable NDP. with They have the given a democratic threat idea, to that the regional open party, idea. Of course, at the just same time, so that they're all our of neighbor, them will come with them. and we're in BJP competition did with not them. increase their vote share in Meghalaya. And frankly, they had more than 9.5% if we're going to talk about production, throughout the elections, right? be it in the general elections in the We Lok are the Sabha, biggest game in or town. be it in the And so they see us as a problem. Assembly. So whereas Right. only 2 seats, the So, Honorable Prime Minister is coming tomorrow, and all other my approach BJP leaders to just they are offering to market the BJP that vision they are of, getting a government in Meghalaya. of This productivity, of how they prosperity. betrayed the people Well, of we should Meghalaya have and a how vision they of market prosperity too. to the rest of India. And Thank that you. includes the West and India. But मैं that's बहुत missing. संक्षिप्त में हिंदी में बोल देती हूँ जो Right. पाला जी ने आपको So to me, अंग्रेजी में that's बोला, where आपने the खुद work needs सुना, to be done. और ये हमारे It शब्द seems to नहीं me थे। that as someone who's मेघालय lived a की long time in सरकार Asia and वो watched the politics there, it's ट्रांसफॉर्मर going to be है, very वो hard to जला have a हुआ फूका successful, हुआ productive Asian ट्रांसफॉर्मर है century जिसको उखाड़ if India फेंको। and China ये are at कॉनराड शर्मा जी loggerheads. की So एनपीपी how के बारे में can you foresee वक्तव्य a थे। rapprochement ये between कि India and China and सबसे how भ्रष्ट might नंबर 1 that भ्रष्ट happen? How सरकार could पूरे that देश में happen? है और पैसा आने के बावजूद पैसा I don't आगे know नहीं about, पहुंचता है, rapprochement, भर्तियां नहीं होती हैं, भाई भतीजावाद है, हर जगह पैसा I चल do रहा है, ये think मोदी जी के वक्तव्य हैं। that और we एक have to स्पेशल have टास्क a vision फोर्स for the बनाया country. जाएगा Right? And I रिटायर्ड don't think सुप्रीम it's going कोर्ट to जज look की अध्यक्षता like the में Chinese one. इन सारे It can't. संगीन और गंभीर Structurally, we can't do that. भ्रष्टाचार So के it's got to be मामलों a की जांच decentralized करने one. के लिए मेघालय And I में think you ये are going to भाजपा have अध्यक्ष a जेपी नड्डा जी level का of competition वक्तव्य था। between the तो two भ्रष्टाचार parties. पर There is चुनाव going to की be, कैंपेन के on the दौरान margins, बोला there's going जाएगा, to be a लेकिन little bit of चुनाव tension, a little bit, की of गतिविधि hostility, but I खत्म think होने it's के very बाद important that the lines are clear. भ्रष्टाचारियों I mean, से they're ही sitting on गलबैयां 2,500 भ्रष्टाचारियों के kilometers of साथ ही मिलकर That's सरकार the fact. बनाई जाएगी। ये असली चाल चरित्र और चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, और छुटभइये नेताओं ने नहीं, इस देश के प्रधानमंत्री ने, इस देश के गृह मंत्री ने और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने पुरजोर तरीके से मेघालय की कॉनराड सांगमा की सरकार को, जिसका वो हिस्सा थे, सबसे भ्रष्ट सरकार बताया और ये कहा कि इनके खिलाफ जांच होनी चाहिए, और अब उन्हीं के साथ हाथ जोड़ने को तैयार खड़े हैं 2 सीट लेकर। तो अगर ये पाखंड और ढोंग नहीं है तो और क्या? और ऐसा पाखंड और ढोंग भ्रष्टाचार पे हमने लगातार कर्नाटक में देखा है, हमने लगातार मध्य प्रदेश में देखा है, हमने लगातार गोवा में देखा है, लगातार उत्तर प्रदेश में देखा है, लेकिन अब समय आ गया है कि इस पर चर्चा हो, इस पर बात उठे कि कैसे भ्रष्टाचार पे बड़ी बड़ी डींगे हाँकी जाती हैं जब चुनाव प्रचार किया जाता है, और उन्हीं भ्रष्टाचारियों के साथ एक साथ मिलकर लामबस्त खड़े होने को तैयार रहती है भारतीय जनता पार्टी। अभी कर्नाटक का जो भ्रष्टाचार का संगीन आरोप है, वो कहीं गए नहीं है ठंडे बस्ते में। माडाल जी अभी भी 77 घंटे बाद फरार हैं। ये एमएलए हैं भाजपा के, अभी भी फरार चल रहे हैं। उनके लड़के ने 40 लाख घूस लेते हुए पकड़े गए थे, उनको रिजाइन करना पड़ा कर्नाटका सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड से, लेकिन वो अभी भी फरार हैं। कोर्ट भले पहुंच गए हो राहत के लिए, और उस समय हमें ये सुनाई दे रहा और दिखाई दे रहा है कि कल सरकार का गठन होगा और भारतीय जनता पार्टी उस सरकार का हिस्सा बनेगी। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगी कि पहले अगर आप सुमो मोटो पे पूछ लें तो बड़ी कृपा होगी। In the 21st century is connected enough where Indian media doesn't want to question charges of corruption that the ruling establishment is found deeply entrenched in. So is it then that you're envisaging some more sort of more multipolar order where of course the United States is more powerful, right? So one cannot deny that the United States is powerful, but everybody is required. You can't in the 21st century say, मेघालय we're के going to अध्यक्ष exclude you. उनका बयान मैंने बीफ पर सुना था, That's not possible. और मुझे अच्छा लगा था कि ऐसा now बयान what would इतनी what स्वतंत्रता would से the कोई भारतीय Indian जनता पार्टी में दे सकता elements है। of that bridge look like? 2 शब्द की चुनौती देती हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता successful, in my ऐसा बयान देश के किसी और हिस्से में जाकर बोल दे जहां पर संशय पर हत्या कर दी जाती है, तो बीजेपी के अध्यक्ष मेघालय के जितना चुप रहे उनके लिए कारगर रहेगा। बीजेपी के मेघालय के अध्यक्ष सिर्फ ये बता दें कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आके कहते हैं स्पेशल टास्क फोर्स नो लेस देन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रिटायर्ड जज के अधीन गठित होगा, और वहां पर आप उस सरकार का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और जहां तक आपने प्रोसिक्यूशन की बात करी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की, तो अगर वैलेंटाइंस डे पे युगल जोड़ियों को पीटा जाता है, कालिख पोती जाती है उनके चेहरे पर,
या 25 दिसंबर को जब यीशु मसीह का जन्मदिन मनाया जाता है दुनिया भर में, आप उनकी मूर्तियां तोड़ते हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। जब आप क्रिसमस मनाने जाने वाले लोगों का और सांता क्लॉज बने आदमी तो 5-5 लोग मिलकर पीटते हैं, वो कौन सा लोकतंत्र है? और वो कितनी हिफाजत कर रहे हैं किसी क्रिश्चियन की, ये भी बताने का कष्ट करेंगे। Obviously a massive issue in Europe. I think by and large Congress has supported, if I'm right in this, the Modi government's position of neutrality at the UN when it comes to the war in Ukraine. I mean, how do you think that stands with India's position as a democracy and wanting to provide democratic leadership and upholding, the ideals of freedom and sovereignty? I mean, I would agree with the foreign policy on that issue, and there's also an element of national interest. There are interests. We have to look after our interests. So they're there. But I'm against any type of war. एक हमारा बयान निकाल कर दिखवा दीजिए जहां पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा हो कि हम स्पेशल टास्क फोर्स करेंगे सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में, क्योंकि ये नंबर 1 भ्रष्ट सरकार है। जिस सरकार का आप 5 साल हिस्सा रहे, उसके खिलाफ आप प्रोब कराने की बात कर रहे हैं, उसके खिलाफ प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक बोल रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं, और अब आप उनके साथ गलबैया करने को तैयार हैं, आप सवाल भी न उठाएं, ये तो नहीं होगा। आपने हमारी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की बात करी, बड़ा अच्छा जिक्र लाया, क्योंकि हमने साथ मिलकर भाजपा के 33 साल के किले को ध्वस्त किया कस्बा पे। अभी भाजपा military equipment और भाजपा ने हमारे अलायंस पार्टनर के साथ जो करना था महाराष्ट्र में, courting India in part because of the issues that you have with China, and we see the existential threat from China. So could you foresee this shift happening over time? मुझे लगता है सवाल पूछना अच्छी बात है, लेकिन आज की वस्तुतः स्थिति को नकार दें हम और हम इस पर कुछ ना बोलें, वो शायद लोकतंत्र का भी असम्मान है। That's up to you, how well you court India. Yeah. So, and could you ever envisage an India that does move away from multi-alignment or non-alignment to kind of hard alliances? I don't know. I don't think about it like that. I think what is it that we're trying to achieve? Right? Start from there. What is our problem? Our problem is we've got a huge population. ऐसा है we need to कि हम बिल्कुल भी कंफ्यूज्ड नहीं, we need to give them हमारी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। अगर आज राबड़ी देवी के यहाँ सीबीआई रेड कर रही है, हम उसकी भर्त्सना करते हैं, और इसलिए करते हैं क्योंकि ये कोई संयोग नहीं है कि 4 गुना ईडी के केसेस बढ़ गए 2014 के बाद, और 95% केसेस आपके सारे के सारे विपक्ष के खिलाफ है। आपकी ईडी, आपकी सीबीआई, आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस जो ऑलरेडी प्रोब कर रहा है, वो अडानी के घर नहीं पहुंचता है, अडानी को एक नोटिस नहीं जाता है, वहां उनके पोर्ट पर, भैया मुद्रा पोर्ट पर लाखों करोड़ों रुपए की ड्रग्स पकड़ ली जाती, एक एनसीबी की रेड नहीं होती है, कोई चर्चा नहीं होती है। तो हमारा जो स्टैंड एजेंसीज के दुरुपयोग पर है, वो बिना संशय के, बिना लब्बो-लबाब के एक ही बात है कि एजेंसीज का दुरुपयोग ऑपोजिशन के खिलाफ किया जाता है। लेकिन जिस वाकये का आप जिक्र कर रहे हैं, एक ये भी सच है कि दिल्ली की शराब नीति उस वक्त बनाई जा रही थी जब दिल्ली बेदम होकर बिना ऑक्सीजन के तड़प रहा था, और अगर ये नीति विड्रॉ न करी गई होती तो हर घर के नीचे शराब का ठेका खुलने का बंदोबस्त हो गया था, महिला सुरक्षा या अराजकता को ताक पर। तो ये सवाल कैसे नहीं उठेगा, और ये सवाल ये भी उठेगा कि जब विपक्ष, बाकी विपक्ष के खिलाफ एक्शन करती है ये एजेंसी, चाहे वो हमारे नेता हो या चाहे वो बिहार में हो या चाहे वो महाराष्ट्र के नेता हो, आम आदमी पार्टी एक शब्द नहीं बोलती। क्यों नहीं बोलते वो? आपको डिसाइड करना है कि आप भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है या आप विपक्ष में हैं, और अगर आप विपक्ष में हैं तो आपको विपक्ष के साथ हर मुद्दे पे खड़ा रहना पड़ेगा। और इसमें सबसे बड़ा पाखंड और ढोंग तो भारतीय जनता पार्टी का नजर आता है। 7 सांसद आपके थे, 8 विधायक आपके थे, तमाम काउंसलर आपके थे, लेकिन जब ये शराब नीति बन रही थी तो सबको सांप सूंघा हुआ था। उन लोगों की लिस्ट देख लीजिए जिनको फायदा पहुंचाने का काम आप करने वाली थी, उसमें से अधिकांश तो भाजपा के डोनर लिस्ट में नाम आता है। तो ये जो नूरा कुश्ती है, इस पर हम कंफ्यूज बिल्कुल नहीं है। हमारा स्टैंड क्लियर है कि आरोप बड़े गंभीर हैं, आरोप के ओरिजिनल
कंप्लेनेंट शिकायत करता हम हैं और इस पर बिल्कुल जांच होनी चाहिए, लेकिन उसी सांस में मुझे बिल्कुल भी संशय नहीं है ये कहने में कि अधिकांश जगहों पर आप ऑपोजिशन के खिलाफ ही अपनी एजेंसी को यूज करते हैं। कहाँ इनकी एजेंसी क्यों नहीं पहुंची अपने कर्नाटक एमएलए के यहाँ जिनका लड़का 40 लाख की घूस लेते हुए पकड़ा गया? कहाँ ये एजेंसी येड्डी जी के खिलाफ जब अब उनका हाथ पकड़ के मोदी जी टहला रहे हैं क्योंकि इलेक्शन आ गए, उनको गंभीर आरोपों के दौरान निकाला गया था? तो ये तो दोहरा मापदंड है। हम दोहरा मापदंड कहीं नहीं अपनाते, ना बिल्कुल भी कंफ्यूज्ड है। But then what do we do? Or what is happening today? मुझे लगता है कोई विपक्ष का दूसरा नेता कौन क्या कह रहा है उनका हम थोड़ी मुंह पकड़ के बैठ सकते हैं। ये सवाल ही अपने आप में बेमाना है। हम दूसरा विपक्ष का कोई नेता क्या कह रहे हैं हम उस पर नहीं पकड़ सकते। जैसे कि जब हमारे नेताओं के खिलाफ ईडी हर तरह की षड्यंत्र कर रही थी तो समूचा विपक्ष हमारे साथ खड़ा था, लेकिन तब क्या किसी ने पूछा था कि समूचा विपक्ष खड़ा है, आम आदमी पार्टी क्यों नहीं खड़ी है? राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी समूचे विपक्ष ने, क्यों नहीं आम आदमी पार्टी ने उस पर साइन किया था? तो जब आपके ऊपर आए तो सारा तंत्र वो हो जाए और जब हमारे ऊपर रहे तो आप एक चूना करिए, ऐसे तो नहीं चल सकता है। So I don't agree that manufacturing per se is dead, right? I look at it by saying, okay, here is the skill. What do we need now? 2 days back, I think less than 48 hours back, I had played some videos here. And those videos had Mr. Modi stating the most obnoxious things on foreign soil. From Seoul to Shanghai to Moscow to Toronto to the US to Abu Dhabi to Oman, wherever he has traveled, he has always spoken against India's political leaders. He has said things like, लोग समझते थे क्या पाप किया है कि हिंदुस्तान में पैदा हुआ in Shanghai on Chinese soil. He has said things like nothing happened in 70 years. He has demeaned India's freedom struggle. He has demeaned the institutions that we have built. He has demeaned an average Indian who works very hard and contributes to nation building. Is that not defaming India? System. And who are you talking about? That Goli Maro Anurag Thakur? Huge potential. Who actually got promoted because he was speaking venomous hate speeches. If he had not spoken that, he would have never graduated from being a Minister of State to a cabinet rank. And I want to ask him, when Rahul Gandhi talks about a world which is divided between America and China on two sides and India can be that huge power with its democratic values and the values of Mahatma Gandhi, is he defaming India or is he actually lauding India's values? When Rahul Gandhi says on foreign soil, on British soil, that Indian democracy is a public good, I think we should be very proud about it. And instead the BJP is finding facts to criticize it? What exactly is their position? And what do they have to say about the various statements that Mr. Modi has made? And may I please indulge me for 10 seconds also ask you a question. The BJP has issues with what Rahul ji has said. Let us debate every issue in India's parliament. I challenge you. Are you willing to debate every issue in India's parliament? Are you willing to come forward and say that when Mr. Gandhi speaks about Adani, we will answer on Adani. When he speaks about high prices, we will not say hum lesan pyaz nahi khate. When he speaks about unemployment, we will not say pakoda tallo. When he speaks on China, we will not say koi ghusa hua nahi hai. Are you willing to debate? You cannot. And I challenge you, they cannot debate these issues. Just does not see the world in a binary way. मुझसे सवाल पूछा गया, अनुराग गोली मारो ठाकुर ने कुछ वक्तव्य दिया है राहुल जी पर। अनुराग ठाकुर की जो पदोन्नति है वो उनके नफरती बयान के बाद हुई। अगर उन्होंने मंच से ये घृणित नफरती बयान करके दिल्ली के दंगे ना भड़काए होते तो शायद उनकी पदोन्नति भी ना होती, वो मंत्री राज्य स्तर के ही बने रहते। कैबिनेट मंत्री बनने के लिए उनको नफरत का सहारा लेना पड़ा, तो वो तो सबसे पहले पाठ ना पढ़ाए, वो मुझे बताएं किसने कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया इस देश में हिंसा भड़काने का। पहला सवाल। दूसरा सवाल, प्रधानमंत्री मोदी ने, चाहे वो चीन हो, चाहे वो दक्षिण कोरिया हो, या जहां पर भी वो जाते हैं, चाहे वो मॉस्को हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो ओमान हो, अबू धाबी हो, टोरंटो हो, जहां पर भी वो जाते हैं वो देश के ऑपोजिशन के खिलाफ ही आग उगलते हैं। जब वो कहते हैं विदेशी धरती पर कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तो वो देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, क्रांतिकारियों का और हर भारतीय का अपमान करते हैं जो 2 जून की रोटी कमाकर राष्ट्र निर्माण में सहयोग करता है। और इसीलिए मैं पूछती हूं, जब वो कहते हैं कि हिंदुस्तान के लोग 2014 से पहले कहते थे क्या पाप किया कि हिंदुस्तान में पैदा हो गए, वो सम्मान बढ़ा रहे हैं देश का या देश का सिर झुकाने का काम करते हैं? और मैं आपके सामने एक सवाल बोलती हूं और पूछती हूं, राहुल गांधी जी ने क्या कहा? राहुल गांधी जी ने कहा एक दुनिया जहां पर अमेरिका और चीन लड़ रहा है, वहां पर हिंदुस्तान की जो लोकतंत्र है
वो इस विश्व के लिए सौगात है और हमारी बड़ी अहम भूमिका होगी। इसको तो सिर माथे लेना चाहिए और ताली बजानी चाहिए भाजपा के लोगों को, लेकिन इन नासमझों को न समझ है और न देश से प्यार है। और अंत में एक बात कहती हूं, आपको लगता है राहुल गांधी जी ने कुछ गलत कहा है तो आइए बात हो जाती है, सदन में बात कर लीजिए, लेकिन शर्त एक ही है, जब वो अडानी पर बोलेंगे तो आप कांपते हाथों से पानी नहीं पीजिएगा, आपको अडानी पर बात करनी पड़ेगी। जब वो महंगाई पर बोलेंगे तो हम लहसुन प्याज नहीं कह के कहते आप भाग नहीं जाइएगा। जब वो बेरोजगारी पर बोलेंगे तो पकौड़े तलने को नहीं कहा जाएगा। और जब वो चीन पर बोलेंगे तो आप सारे देश के सामने बिना पलक झपकाए ये झूठ नहीं बोल सकते कि कोई घुसा हुआ नहीं है। अगर आप में हिम्मत है तो आइए हर मुद्दे पर चर्चा कर लेते हैं पार्लियामेंट में। आप में हिम्मत नहीं है, आप में सिर्फ दुष्प्रचार करना है और आपको अधिकांश चरण चुंबक जो बन चुका है मीडिया उसका सहारा है। अगर वो सहारा ना हो 2 दिन आप टिक कर खड़े नहीं रह सकते। It means, you know, I am sitting almost in silence, almost as if I'm dead and I'm listening to you. That's something Indian people can do. It's a very powerful thing, right? I think and it's wrong because Gandhi himself went and campaigned, so to speak, the grandmasters, and he campaigned people like Gandhi. Not only Rahul Gandhi, that's most actually of the what they're senior doing. Party leaders from the Congress, they came and campaigned. It's a philosophical so thing. I think but that's not the case. It's the power of the Indian civilization. We also have campaigned it's why in Meghalaya, right from it's where right from you know the West got zero from members from the state as well as member from the central. Right, and then that no, you're laughing, but then and also Jairam then when that zero arrives so many in the of West, them came to Meghalaya, even Sachin Pilot and all came. It completely transforms and does something that it can't do in India. Senior party leaders from Delhi, because when it comes into contact with your philosophy, the sum of both those things is much bigger than either of them. So to me, that's how I see it. I mean, I used to sit on a table when I was small, and my if S. Jaishankar stood the threat about China, he would not tell Chinese that we are a smaller economy and you are a larger economy, and how do we go and attack them? Is that not what he said in his interview? Mr. S. Jaishankar should actually resign from his position. If he had inch and an iota of morality in him, he should resign. And if there was an inch and an iota of morality or moral compass alive in the Modi government, he should be sacked for making a blasphemous statement like that. Because in one single stroke, he has actually demeaned our forces. He has put everyone to shame. That are actually powerful and useful for me. आप सबको हमारा नमस्कार. And in turn, I have ideas that might be powerful and useful for him. Member of Parliament और मेघालय पीसीसी के अध्यक्ष श्री विंसेंट पाला जी हैं. आपने वीडियो पर जो देखा उसी के बारे में चर्चा करने को हम लोग आए हैं. कल शपथ ग्रहण समारोह है मेघालय की सरकार का. उनके बारे में हमने क्या कहा वो तो जुदा बात है. उनके बारे में बीजेपी के महानुभावों ने क्या कहा वो आपके सामने और अब वो इस सरकार का हिस्सा बने. So I will hand over the floor to my senior colleague, Shri Vincent Palaji, who heads the PCC in Meghalaya and also a member of Parliament, to speak to you about the government formation that's going to happen in Meghalaya tomorrow. And for some reason, people are convinced said during the campaign that speaking is more powerful. And what exactly are they turning up to do? Even if you're speaking to me and I'm listening to you, I understand what you're going to do. Thank you and good afternoon, everyone. Right? I can predict what you're going to do if I listen carefully. I just would like to remind so many questions. The gentleman at the front, if you can tell us who you are and any affiliation, and the mic's coming to you, and please keep it to a question, not a statement. Thank you. Thank you very much. Hanif Adil, former advisor, British Parliament, British Government. The question, I'm going to come to the question. I just want to make one point. Okay? It's contextual. Okay. Rahulji, thank you very much for your very sobering analysis. Clearly, the comparison between the RSS and the Muslim Brotherhood is an interesting one. The fact is, the BJP have captured the narrative and the institutions in a way that most people would have thought that they could not have. So clearly, listening, all the things you're doing are great. But in terms of a clinical approach, what would be your short to medium-term plan in terms of projecting what you stand for, what your party stands for, what you want to achieve with the grassroots,
because you're taking on somebody who is a populist, who clearly has support, who's captured the whole state effectively. Before the election, during the campaign. That's my question. Thank you. I think betray the people is a false promises. I think the walk that we did in the last 4.5 months they have given a is a powerful party model. Just so and that I think all of them will come with them. BJP it brings in a lot of the ingredients of a response to 9.5% what you're talking about. And I think be it in the general it elections, works in the Lok Sabha, for or most be of the it in opposition in India. It's legislative acceptable to assembly. most of the opposition in India. Whereas So only reaching 2 out seats, to the people honorable in Prime Minister is coming interesting from ways all other, and BJP making sure leaders that you're having a direct just connect with people to market the BJP and that building they are getting a government in a Meghalaya. new This imagination, totally how I they think betray the is people of central Meghalaya and how they to market fighting the BJP. to the rest Also, of don't India. Thank you. underestimate the resistance. You know, मैं बहुत संक्षिप्त में हिंदी में बोल authoritarian देती हूँ people जो बालाजी ने आपको अंग्रेजी like में to बोला demonstrate आपने how खुद powerful सुना they are and how strong और they ये are. हमारे शब्द नहीं थे The मेघालय resistance in India is की also very सरकार strong वो and very powerful. ट्रांसफॉर्मर है वो जला हुआ फूका हुआ and can do ट्रांसफॉर्मर wonders. है जिसको उखाड़ फेंको ये कॉनराड सांगमा जी की But you know एनपीपी के what? बारे में वक्तव्य थे If we step ये back कि from सबसे भ्रष्ट नंबर the 1 भ्रष्ट BJP सरकार पूरे Congress देश में है conversation, और पैसा आने के बावजूद पैसा आगे नहीं पहुंचता है भर्तियां नहीं What होती हैं India भाई is, what's भतीजावाद है actually हर जगह happening पैसा चल रहा है ये मोदी is जी a के वक्तव्य हैं huge और एक transition स्पेशल in टास्क India. फोर्स बनाया जाएगा huge रिटायर्ड migration सुप्रीम of कोर्ट people. जज की अध्यक्षता And में India is now searching for इन सारे संगीन और गंभीर new model भ्रष्टाचार with which to के engage मामलों की जांच करने के लिए with its मेघालय people में and the rest of the ये world, भाजपा right? अध्यक्ष And जेपी what's very नड्डा जी clear का वक्तव्य था is that the तो BJP भ्रष्टाचार model पर is not चुनाव की कैंपेन के Because दौरान it's बोला creating जाएगा much too much turbulence, लेकिन चुनाव much too much की resistance. गतिविधि खत्म होने So के the real बाद challenge that people like me and other leaders भ्रष्टाचारियों in the से ही opposition गलबैयां have भ्रष्टाचारियों is what के does that साथ thing ही look like? मिलकर सरकार बनाई जाएगी ये असली चाल चरित्र और चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का और छुटभइये नेताओं ने नहीं इस देश के प्रधानमंत्री ने इस देश के गृह मंत्री ने और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने पुरजोर तरीके से मेघालय की कॉनराड सांगमा की सरकार को जिसका वो हिस्सा थे सबसे भ्रष्ट सरकार बताया और ये कहा कि इनके खिलाफ जांच होनी चाहिए और अब उन्हीं के साथ हाथ जोड़ने को तैयार खड़े हैं 2 सीट लेकर तो अगर ये पाखंड और ढोंग नहीं है तो और क्या और ऐसा पाखंड और ढोंग भ्रष्टाचार पे हमने लगातार कर्नाटक में देखा है हमने लगातार मध्य प्रदेश में देखा है हमने लगातार गोवा में देखा है लगातार उत्तर प्रदेश में देखा है लेकिन अब समय आ गया है कि इस पर चर्चा हो इस पर बात उठे कि कैसे भ्रष्टाचार पे बड़ी बड़ी डींगे हाँकी जाती हैं जब चुनाव प्रचार किया जाता है और उन्हीं भ्रष्टाचारियों के साथ एक साथ मिलकर लामबस्त खड़े होने को तैयार रहती है भारतीय जनता पार्टी अभी कर्नाटक का जो भ्रष्टाचार का संगीन आरोप है वो कहीं गए नहीं है ठंडे बस्ते में माडाल जी अभी भी 77 घंटे बाद फरार हैं ये एमएलए हैं भाजपा के अभी भी फरार चल रहे हैं उनके लड़के ने 40 लाख घूस लेते हुए पकड़े गए थे उनको रिजाइन करना पड़ा कर्नाटका सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड से लेकिन वो अभी भी फरार हैं कोर्ट भले पहुंच गए हो राहत के लिए और उस समय हमें ये सुनाई दे रहा और दिखाई दे रहा है कि कल सरकार का गठन होगा और भारतीय जनता पार्टी उस सरकार का हिस्सा बनेगी मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगी कि पहले अगर आप सुओ मोटो पे पूछें तो बड़ी कृपा होगी आपकी It's not just important for us. We'll deal with our problem. But you must be aware the that Indian media this problem want is to question charges of going to corruption play that the out ruling establishment at a global scale. It's not just going to play out in India. Right? Speaks a lot about and what you do about it is of course up to you. पूछना चाहिए तो आप पूछ भी But you must be aware that in what is happening in India, the idea of a democratic model is being attacked and threatened. जो बीजेपी के मेघालय के अध्यक्ष हैं उनका बयान मैंने सुना था और मुझे अच्छा लगा था कि ऐसा बयान इतनी स्वतंत्रता से कोई भारतीय जनता पार्टी में दे सकता है 2 शब्द की चुनौती देती हूँ भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता ऐसा बयान देश के किसी और हिस्से में जाकर बोलते जहां पर संशय पर हत्या कर दी जाती है
तो बीजेपी के अध्यक्ष मेघालय के जितना चुप रहे उनके लिए कारगर रहेगा। बीजेपी के मेघालय के अध्यक्ष ये बता दें कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आके कहते हैं स्पेशल टास्क फोर्स नो लेस देन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रिटायर्ड जज के अधीन गठित होगा और वहां पर आप उस सरकार का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और जहां तक आपने प्रोसिक्यूशन की बात करी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की, तो अगर वैलेंटाइंस डे पे युगल जोड़ियों को पीटा जाता है, कालिक पोती जाती है उनके चेहरे पर, या 25 दिसंबर को जब यीशु मसीह का जन्मदिन मनाया जाता है दुनिया भर में, आप उनकी मूर्तियां तोड़ते हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। जब आप क्रिसमस मनाने जाने वाले लोगों का और सांता क्लॉज बने आदमी को 5-5 लोग मिलकर पीटते हैं, वो कौन सा लोकतंत्र है और वो कितनी हिफाजत कर रहे हैं किसी क्रिश्चियन की, ये भी बताने का कष्ट करेंगे वो। And fundamentally, what are these guys not getting? Thank you. If you look at what has happened in Ukraine, right? The basic principle of Ukraine, the basic principle that has been applied in Ukraine is that the Russians have told the Ukrainians that we do not accept the relationship you have with Europe and America. And if you do not change this relationship, we will change आपका सवाल बहुत अच्छा है। your territory. एक हमारा बयान निकाल कर दिखवा दीजिए जहां पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा हो कि हम स्पेशल टास्क फोर्स गठित करेंगे सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में, क्योंकि ये नंबर 1 भ्रष्ट सरकार है। जिस सरकार का आप 5 साल हिस्सा रहे, उसके खिलाफ आप प्रोब कराने की बात कर रहे हैं, उसके खिलाफ प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक बोल रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं, और अब आप उनके साथ गलबैया करने को तैयार और हम सवाल भी ना उठाएं, ये तो नहीं होगा। आपने हमारी महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की बात करी, बड़ा अच्छा जिक्र लाया, क्योंकि हमने साथ मिलकर भाजपा के 33 साल के किले को ध्वस्त किया है कस्बा पेट पर। अभी भाजपा उस हार से उबर नहीं पाई है और भाजपा ने हमारे अलायंस पार्टनर के साथ जो करना था महाराष्ट्र में वो करके लोकतंत्र को बिल्कुल क्षीण करने का काम किया है। मैं आपसे पूछती हूँ, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कट्टरता का, हमारे कौन से अलायंस पार्टनर ने कौन सी कट्टरता दिखाई? मुझे लगता है सवाल पूछना अच्छी बात है, लेकिन आज की वस्तुतः स्थिति को नकार दें हम और हम इस पर कुछ ना बोलें, वो शायद लोकतंत्र का भी असम्मान होगा। Brown jumper. जी बताएं। Hello, thank you very much. Yes, no, it's me. Thank you very much. My name is Malini Mehra, and I run an international parliamentary organization that works on climate change. But my question is raised to you as a citizen of India. There are many of us in the international diaspora. There are something more than 20 million Indians in the international diaspora. You spoke about the need for India to address these issues. हम बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं है। Not within its own हमारी borders, पार्टी का because you स्टैंड have the बिल्कुल international क्लियर है। diaspora. अगर आज And राबड़ी many देवी people के यहाँ like myself सीबीआई no longer रेड कर रही है, हम उसकी भर्त्सना करते हैं और इसलिए करते हैं क्योंकि ये कोई The issues संयोग नहीं facing है India. कि 4 गुना ईडी के केसेस बढ़ गए 2014 के बाद और 95% केसेस आपके सारे के सारे विपक्ष के खिलाफ है। आपकी ईडी, आपकी सीबीआई, आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस जो ऑलरेडी प्रोब कर रहा है, वो अडानी के घर नहीं पहुंचता है, अडानी को एक नोटिस नहीं जाता है, वहां उनके पोर्ट पर भैया मुद्रा पोर्ट पर लाखों करोड़ों रुपए की ड्रग्स पकड़ ली जाती, एक एनसीबी की रेड नहीं होती है, कोई चर्चा नहीं होती है। तो हमारा जो स्टैंड एजेंसीज के दुरुपयोग पर है वो बिना संशय के, बिना लबो आपके एक ही बात है कि एजेंसीज का दुरुपयोग ऑपोजिशन के खिलाफ किया जाता है। लेकिन जिस वाक्य का आप जिक्र कर रहे हैं, एक ये भी सच है कि दिल्ली की शराब नीति उस वक्त बनाई जा रही थी जब दिल्ली बेदम होकर बिना ऑक्सीजन के तड़प रहा था, और अगर ये नीति विड्रॉ न करी गई होती तो हर घर के नीचे शराब का ठेका खुलने का बंदोबस्त हो गया था, महिला सुरक्षा या अराजकता को ताक पर रखकर। तो ये सवाल कैसे नहीं उठेगा, और ये सवाल इसलिए भी उठेगा कि जब विपक्ष, बाकी विपक्ष के खिलाफ एक्शन करती है ये एजेंसीज, चाहे वो हमारे नेता हो या चाहे वो बिहार में हो या चाहे वो महाराष्ट्र के नेता हो, आम आदमी पार्टी एक शब्द नहीं बोलती। क्यों नहीं बोलते वो?
आपको डिसाइड करना है कि आप भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है या आप विपक्ष में हैं। और अगर आप विपक्ष में हैं तो आपको विपक्ष के साथ हर मुद्दे पे खड़ा रहना पड़ेगा। और इसमें सबसे बड़ा पाखंड और ढोंग तो भारतीय जनता पार्टी का नजर आता है। 7 सांसद आपके थे, 8 विधायक आपके थे, तमाम काउंसलर आपके थे, लेकिन जब ये शराब नीति बन रही थी तो सबको सांप सूंघा हुआ था। उन लोगों की लिस्ट देख लीजिए जिनको फायदा पहुंचाने का काम आप करने वाली थी, उसमें से अधिकांश तो भाजपा के डोनर लिस्ट में नाम आता है। तो ये जो नूरा कुश्ती है इस पर हम कंफ्यूज बिल्कुल नहीं है। हमारा स्टैंड क्लियर है कि आरोप बड़े गंभीर हैं। आरोप के ओरिजिनल कंप्लेनेंट, शिकायत करता हम हैं और इस पर बिल्कुल जांच होनी चाहिए। लेकिन उसी सांस में मुझे बिल्कुल भी संशय नहीं है ये कहने में कि अधिकांश जगहों पर आप ऑपोजिशन के खिलाफ ही अपनी एजेंसी को यूज करते हैं। कहां इनकी एजेंसी क्यों नहीं पहुंची अपने कर्नाटक एमएलए के यहाँ जिनका लड़का 40 लाख की घूस लेते हुए पकड़ा गया? कहां ये एजेंसी येड्डी जी के खिलाफ जब अब उनका हाथ पकड़ के मोदी जी टहला रहे हैं क्योंकि इलेक्शन आ गए, उनको गंभीर आरोपों के दौरान निकाला गया था? तो ये तो दोहरा मापदंड है। हम दोहरा मापदंड कहीं नहीं अपनाते, ना बिल्कुल भी कंफ्यूज्ड है। And that you protect by telling everybody in the rest of the world that मुझे लगता है कोई विपक्ष का दूसरा नेता कौन क्या कह रहा है उनका हम थोड़ी मुंह पकड़ के बैठ सकते हैं। सवाल ही अपने आप में बेमाना है। हम दूसरा विपक्ष का कोई नेता क्या कह रहे हैं हम उस पर नहीं पकड़ सकते। जैसे कि जब हमारे नेताओं के खिलाफ ईडी हर तरह की षड्यंत्र कर रही थी तो समूचा विपक्ष हमारे साथ खड़ा था। लेकिन तब क्या किसी ने पूछा था कि समूचा विपक्ष खड़ा, आम आदमी पार्टी क्यों नहीं खड़ी है? राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी समूचे विपक्ष ने, क्यों नहीं आम आदमी पार्टी ने उस पर साइन किया था? तो जब आपके ऊपर आए तो सारा तंत्र वो हो जाए और जब हमारे ऊपर रहे तो आप एक चूना करिए, ऐसे तो नहीं चल सकता। Defeat BJP, but do you think with Mr. Kharge as a party president, you are well equipped to defeat BJP in the next elections? Look, Mr. 2 days Kharge back, was I elected think less as than 48 president hours back, I had played some videos here. And those videos had Mr. Modi stating the most obnoxious things on foreign soil. He is the From the Seoul to president Shanghai of the Congress Party. to Moscow to Toronto to the US we're to all Abu Dhabi working to together Oman, to fight, wherever he has traveled, he has BJP. always And I'm spoken against extremely India's political confident leaders. in He Mr. has said Kharge's things like, capabilities लोग and his समझते थे expertise. क्या I don't know- पाप किया है I don't कि know if you हिंदुस्तान know में his पैदा हुए history. in Shanghai You know on his history? Chinese soil. Uh, He has said things like nothing happened in he's been- 70 he years. was a He has Congress demeaned worker. India's freedom He's been a struggle. He has Congress demeaned worker the for institutions that many we have years. built. He has demeaned And an he's average Indian who come up the works very ranks hard and and he's an contributes to extremely nation capable, building. Is dynamic that not person. defaming India? I'm very confident in And who his are you leadership. talking about? That Goli Maro Anurag Thakur, Over here, maybe who actually got promoted because he was speaking venomous hate speeches. If he had not spoken that, he would have never graduated from being a minister of state to a cabinet rank. And I want to ask him, when Rahul Gandhi talks about a world which is divided between America and China on two sides, and India can be that huge power with its democratic values and the values of Mahatma Gandhi, is he defaming India or is he actually lauding India's values? When Rahul Gandhi says on foreign soil, on British soil, that Indian democracy is a public good, I think we should be very proud about it. And instead the BJP is finding facts to criticize it. What exactly is their position? And what do they have to say about the various statements that Mr. Modi has made? And may I please indulge me for 10 seconds also ask you a question. The BJP has issues with what Rahul ji has said. Let us debate every issue in India's parliament. I challenge you. Are you willing to debate every issue in India's parliament? Are you willing to come forward and say that when Mr. Gandhi speaks about Adani, we will answer on Adani. When he speaks about high prices, we will not say hum lesan pyaz nahi khate. When he speaks about unemployment, we will not say pakoda tallo. When he speaks on China, we will not say koi ghusa hua nahi hai. Are you willing to debate? You cannot. And I challenge you, they cannot debate these issues. And we're trying to manage this energy as it's मुझसे सवाल पूछा गया, अनुराग गोली मारो ठाकुर ने कुछ वक्तव्य दिया है राहुल जी पर। अनुराग ठाकुर की जो पदोन्नति है वो उनके नफरती बयान के बाद हुई। अगर उन्होंने मंच से ये घृणित नफरती बयान करके दिल्ली के दंगे ना भड़काए होते तो शायद उनकी पदोन्नति भी ना होती, वो मंत्री राज्य स्तर के ही बने रहते। कैबिनेट मंत्री बनने के लिए उनको नफरत का सहारा लेना पड़ा, तो वो तो सबसे पहले पाठ ना पढ़ाए, वो मुझे बताएं किसने कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया इस देश में हिंसा भड़काने का। पहला सवाल। दूसरा सवाल, प्रधानमंत्री मोदी ने, चाहे वो चीन हो, चाहे वो दक्षिण कोरिया हो, या जहां पर भी वो जाते हैं, चाहे वो मॉस्को हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो ओमान हो, अबू धाबी हो, टोरंटो, जहां पर भी वो जाते हैं, वो देश के ऑपोजिशन के खिलाफ ही आग उगलते हैं।
जब वो कहते हैं विदेशी धरती पर कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तो वो देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, क्रांतिकारियों का और हर भारतीय का अपमान करते हैं जो 2 जून की रोटी कमाकर राष्ट्र निर्माण में सहयोग करता है। और इसीलिए मैं पूछती हूं, जब वो कहते हैं कि हिंदुस्तान के लोग 2014 से पहले कहते थे क्या पाप किया कि हिंदुस्तान में पैदा हो गए, वो सम्मान बढ़ा रहे हैं देश का या देश का सिर झुकाने का काम करते हैं? और मैं आपके सामने एक सवाल बोलती हूं और पूछती हूं, राहुल गांधी जी ने क्या कहा? राहुल गांधी जी ने कहा एक दुनिया जहां पर अमेरिका और चीन लड़ रहा है, वहां पर हिंदुस्तान की जो लोकतंत्र है वो इस विश्व के लिए सौगात है और हमारी बड़ी अहम भूमिका होगी। इसको तो सिर माथे लेना चाहिए और ताली बजानी चाहिए भाजपा के लोगों को, लेकिन इन नासमझों को न समझ है और न देश से प्यार है। और अंत में एक बात कहती हूँ, आपको लगता है राहुल गांधी जी ने कुछ गलत कहा है तो आइए बात हो जाती है, सदन में बात कर लीजिए, लेकिन शर्त एक ही है, जब वो अडानी पर बोलेंगे तो आप कांपते हाथों से पानी नहीं पीजिएगा, आपको अडानी पर बात करनी पड़ेगी। जब वो महंगाई पर बोलेंगे तो हम लहसुन प्याज नहीं कहते आप भाग नहीं जाइएगा। जब वो बेरोजगारी पर बोलेंगे तो पकौड़े तलने को नहीं कहा जाएगा। और जब वो चीन पर बोलेंगे तो आप सारे देश के सामने बिना पलक झपकाए ये झूठ नहीं बोल सकते कि कोई घुसा हुआ नहीं है। अगर आप में हिम्मत है तो आइए हर मुद्दे पर चर्चा कर लेते हैं पार्लियामेंट में। आप में हिम्मत नहीं है, आप में सिर्फ दुष्प्रचार करना है और आपको अधिकांश चरण चुंबक जो बन चुका है मीडिया उसका सहारा है। अगर वो सहारा ना हो 2 दिन आप टिक कर खड़े नहीं रह सकते। It's about talking to people, understanding, what the best, most optimal outcome is, and then heading slowly in that direction. Yeah. Gentleman here in glasses. I think it's wrong because Gandhi himself went and campaigned. Rahul Gandhi came to Shillong. Thank you. And he my name is Zaid Harun, and I'm just a member here. Rahul Gandhi, but I wanted to ask you was, I know there were lots of conversations about the narrative being taken over by BJP and RSS views, and we spoke about the challenges China has brings about. It may be, but I wanted to ask you, would your views or Congress views differ from BJP's on Pakistan? And if there's any members difference? from the state as well as members from the central, they have campaigned actually. Salman Khurshid came. And also Jairam Ramesh ji came. My so many personal view is that even Sachin Pilot and all came. It's important that we have good relations with senior everybody around from Delhi who came to but Meghalaya. Thank you. That also depends on the actions of the Pakistanis. Now, if the Pakistanis are promoting terrorism in India, that becomes very difficult to do, right? And that does happen. If S. Jaishankar stood the threat about China, he would not tell Chinese that we are a smaller economy and you are a larger economy, and how do we go and attack them? Is that not what he said in his interview? Mr. S. Jaishankar should actually resign from his position. If he had inch and an iota of morality in him, he should resign. And if there was an inch and an iota of morality or moral compass alive in the Modi government, he should be sacked for making a blasphemous statement like that. Because in one single stroke, he has actually demeaned our forces. He has put everyone to shame. Possibility of becoming the future Prime Minister of India. What do you think? What actionable plans would you undertake? Member of Parliament और मेघालय PCC के अध्यक्ष श्री that's a very wide canvas you've given me. आपने वीडियो पर जो देखा उसी के बारे में चर्चा करने को हम लोग आए हैं, क्योंकि कल शपथ ग्रहण समारोह है मेघालय की सरकार का। उनके बारे में हमने क्या कहा वो तो जुदा बात है, लेकिन उनके बारे में बीजेपी के महानुभावों में क्या कहा वो आपके सामने, और अब वो इस सरकार का हिस्सा बनेंगे। So I will hand over the floor to my senior colleague, Shri Vincent Palaji, who heads the PCC in Meghalaya and was also a member of Parliament. A lot of women came up to me about the government formation that's going to happen in Meghalaya quite a few tomorrow, of the women spoke about and the kinds of things that the BJP said during the campaign on corruption. And what one of the exactly cases, are they turning up to do? Well, actually, in many of the cases, but in one particular case, I won't go into the details, but in one of the cases, I asked the girl, listen, she'd been attacked, she'd been molested, raped, and I asked her, listen, BJP and all of you here, that you have seen in the video, should we call the police? What the BJP has said during and the she campaign, said, no, don't call the police. I don't want you to call the police. And I said, why don't you want me to call the police? You've come here, you've told me this, and now you don't want me to call the police. And she says, yeah, I don't want to call you to call the police because then I will be shamed. NP is the most corrupt. Right? So to me, that was a very striking thing.
that here's this young girl what they have said the other who parties suffered also. this The Honorable violence Prime Minister against her. has come to Meghalaya. And now she The cannot Honorable act on Home that Minister has violence come to Meghalaya. because she's scared that And she'll the be President shamed. of the BJP has come to Meghalaya. All of them So accused. I was thinking to myself, this the poor girl is NPP. now going to live the rest of her After life, the results, never telling anybody when the this. BJP got only 2 seats And out of 60 seats, then the next It's day going to multiply they the joined pain together. of what happened to her. So this is what the BJP is. So that how is they something I fool the think people of I would India like to change, and that, how they fool the people of Meghalaya. The violence, the That's level of why violence I against think women what they have reduces, given in the and particularly manifesto, this idea what they have preached, that or what of they have, shame, which is done completely a during- before ridiculous the election, idea, during the campaign is is all changed. they betrayed the people. It's a false promises. And today, BJP is behind NPP. They have given a threat to the Thank you, regional everyone, party for joining us just today. Thank you, so that Mr. all of Gandhi, them for your will come time and with them. taking all BJP the did not questions. I'll certainly do my increase best in their vote future share in to Meghalaya. not They had exist more than in the right kind of way and listen 9.5% better. But yeah, throughout please join me again in giving another round of be it applause in to the Rahul Gandhi. general elections in the Lok Sabha or be it in the Legislative Assembly. So whereas only 2 seats, the Honorable Prime Minister is coming tomorrow and all other BJP leaders to market the BJP that they are getting a government in Meghalaya. This totally how they betrayed the people of Meghalaya and how they market to the rest of India. Thank you. मैं बहुत संक्षिप्त में हिंदी में बोल देती हूँ जो पाला जी ने आपको अंग्रेजी में बोला आपने खुद सुना और ये हमारे शब्द नहीं थे मेघालय की सरकार वो ट्रांसफॉर्मर है वो जला हुआ फूका हुआ ट्रांसफॉर्मर है जिसको उखाड़ फेंको ये कॉनराड सांगमा जी की एनपीपी के बारे में वक्तव्य थे ये कि सबसे भ्रष्ट नंबर 1 भ्रष्ट सरकार पूरे देश में है और पैसा आने के बावजूद पैसा आगे नहीं पहुंचता है भर्तियां नहीं होती हैं भाई भतीजावाद है हर जगह पैसा चल रहा है ये मोदी जी के वक्तव्य हैं और एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाया जाएगा रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज की अध्यक्षता में Rahul Gandhi इन सारे संगीन और गंभीर भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने के लिए मेघालय में ये भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का वक्तव्य था तो भ्रष्टाचार पर चुनाव की कैंपेन के दौरान बोला जाएगा लेकिन चुनाव की गतिविधि खत्म होने के बाद भ्रष्टाचारियों से ही गलबैया भ्रष्टाचारियों के साथ ही मिलकर सरकार बनाई जाएगी ये असली चाल चरित्र और चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का और छुटभइये नेताओं ने नहीं इस देश के प्रधानमंत्री ने इस देश के गृह मंत्री ने और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने पुरजोर तरीके से मेघालय की कॉनराड सांगमा की सरकार को जिसका वो हिस्सा थे सबसे भ्रष्ट सरकार बताया और ये कहा कि इनके खिलाफ जांच होनी चाहिए और अब उन्हीं के साथ हाथ जोड़ने को तैयार खड़े हैं तो अगर ये पाखंड और ढोंग नहीं है तो और क्या और ऐसा पाखंड और ढोंग भ्रष्टाचार पे हमने लगातार कर्नाटक में देखा है हमने लगातार मध्य प्रदेश में देखा है हमने लगातार गोवा में देखा है लगातार उत्तर प्रदेश में देखा है लेकिन अब समय आ गया है कि इस पर चर्चा हो इस पर बात उठे कि कैसे भ्रष्टाचार पे बड़ी बड़ी लींगे हाँकी जाती हैं जब चुनाव प्रचार किया जाता है और उन्हीं भ्रष्टाचारियों के साथ एक साथ मिलकर लामबस खड़े होने को तैयार रहती है भारतीय जनता पार्टी अभी कर्नाटक का जो भ्रष्टाचार का संगीन आरोप है वो कहीं गए नहीं है ठंडे बस्ते में माडाल जी अभी भी 77 घंटे बाद फरार हैं ये एमएलए हैं भाजपा के अभी भी फरार चल रहे हैं उनके लड़के ने 40 लाख घूस लेते हुए पकड़े गए थे उनको रिजाइन करना पड़ा कर्नाटका सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड से लेकिन वो अभी भी फरार हैं कोर्ट भले पहुंच गए हो राहत के लिए और उस समय हमें ये सुनाई दे रहा और दिखाई दे रहा है कि कल सरकार का गठन होगा और भारतीय जनता पार्टी उस सरकार का हिस्सा बनेगी मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगी कि पहले अगर आप स्लो मोटो पे पूछ लें तो बड़ी कृपा होगी आपकी The nature of the contest would change completely. The Indian media doesn't want to question charges of corruption that the ruling establishment is found deeply entrenched in. It was a ridiculous thing to say. Speaks a lot about where but the nature of the democratic contest in India has completely changed. And the reason it's changed is because one organization called the RSS
fundamentalist fascist जो बीजेपी के मेघालय के अध्यक्ष हैं उनका बयान मैंने बीच पर सुना था pretty much all of और मुझे अच्छा लगा था कि ऐसा बयान इतनी स्वतंत्रता से कोई भारतीय जनता